In the previous session, we saw that RBI मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे पूरे बड़े इंडियन इकोनॉमी के क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है। आपको लगता होगा एक बेचारी आरबीआई इतने बड़े इकोनॉमी के क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करके कितना थक जाती होगी। तो होल्ड ऑन, क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करना, मॉनिटरी पॉलिसी को फ्रेम करना आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस में से एक छोटू सा फंक्शन है खाली। आरबीआई अपार्ट फ्रॉम फ्रेमिंग मॉनिटरी पॉलिसी बहुत सारे दूसरे फंक्शंस भी कैरी आउट करती है, which will be the discussion of our today's session. Hello everyone and welcome back to the commerce element. Today we will be discussing about central bank and functions of central bank. Central bank मतलब apex institution of the country that controls and regulates the monetary and financial system of the country. किसी भी कंट्री की मॉनिटरी सिस्टम को, किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, जो भी बैंक का काम होता है, दैट बैंक इज नोन एज अ पर्टिकुलर कंट्रीज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को एपेक्स इंस्टीट्यूट बोला जाता है बिकॉज वो बैंक्स का राजा होती है। दैट इज अमंग ऑल द बैंक्स central bank carries the topmost position and as of that India की central bank जो है that is Reserve Bank of India which we know as RBI. So today we will be discussing about the functions that the central bank that is RBI carries out. The very basic function that RBI carries out is issue of currency notes. RBI only has got the sole authority, one and only authority to issue currency notes in the economy. And RBI जो भी currency notes issue करती है, they are known as legal tender. They are known as legal tender because nobody can deny the acceptance of currency notes issued by RBI to settle the transaction. आप किसी भी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए सामने वाले को कैश दो, सामने वाला कैश लेने को डिनाई नहीं कर सकता बिकॉज दैट कैश हैज बीन इश्यूड बाय आरबीआई एंड दस इट बिकम्स लीगल टेंडर। सो बेसिक फंक्शन ऑफ आरबीआई इज वो करेंसी नोट्स को इश्यू करती है। अब करेंसी नोट्स को इश्यू तो कर लिया, अब वो नोट्स मजा है ऐसे इकोनॉमी में सर्क्यूलेट होगी तो फिर इकोनॉमी इम्बैलेंस हो जाएगी। तो खाली करेंसी नोट्स को इश्यू करके आरबीआई आराम से बैठ नहीं जाती। द सेकंड मेजर फंक्शन दैट आरबीआई कैरीज आउट इज इट कंट्रोल्स द क्रेडिट। हाउ इट कंट्रोल्स द क्रेडिट? बाय फ्रेमिंग द मॉनिटरी पॉलिसी which we saw in very detailed form in the previous session. सो आरबीआई इकोनॉमी के लिए मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेम करके फ्लो ऑफ क्रेडिट को पूरे इकोनॉमी में कंट्रोल करती है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, तेजी है, तो आरबीआई फ्लो ऑफ क्रेडिट को मार्केट में से कम कर देगी। अगर इकोनॉमी में मंदी है तो आरबीआई फ्लो ऑफ क्रेडिट को इकोनॉमी में बढ़ा देगी। दैट इज द पावर ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। एंड मॉनिटरी पॉलिसी को फ्रेम करके क्रेडिट को कंट्रोल करना इज द सेकंड मेजर फंक्शन ऑफ आरबीआई। द थर्ड फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब आरबीआई गवर्नमेंट की भी बैंक होती है। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई कैरीज आउट दिस थ्री फंक्शन। आरबीआई एक्ट्स एज बैंक फॉर द गवर्नमेंट। By being the bank of the government, वो गवर्नमेंट के लिए क्या करती है? It manages government's bank accounts. गवर्नमेंट के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो आरबीआई मैनेज करती है, being government's banker. Being government's agent, आरबीआई क्या करती है? It buys and sells government securities in the open market. Previous session monetary policy में हमने देखा one of the instrument of monetary policy is open market operation. Under that open market operation,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई सिक्योरिटीज को बाई करेगी, आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल भी करेगी. Because RBI works as a middleman between government of India and us, the general public, we say that RBI works as an agent to the government, and RBI works as an advisor to the government also. So whenever government wants to have any advice to frame any policies, the government goes to RBI and takes its advice and then frame the policies accordingly. So the third major function of RBI or the central bank is it is banker to the government, and as a banker it carries out these three functions. Moving on further to the fourth function, RBI works as bankers bank. सारी कमर्शियल बैंक्स की बैंक का भी आरबीआई काम करती है, and that is why in the beginning we say RBI is the apex institution, banks का राजा होती है. Now the way the general public maintains relation with commercial bank, same way commercial banks also maintains relation with RBI. अगर हमें बैंक से पैसे चाहिए तो हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं. सेम वे अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसे चाहिए, कमर्शियल बैंक विल टेक लोन फ्रॉम आरबीआई. If we have surplus money, we go and we deposit the surplus money with commercial banks. Same way, commercial banks also can deposit their money with RBI. And thus, जैसे हमारे सबके बैंक अकाउंट्स कमर्शियल बैंक्स में होते हैं, सेम वे सारी कमर्शियल बैंक्स के बैंक अकाउंट्स आरबीआई के साथ भी होंगे. बिकॉज सारी कमर्शियल बैंक्स के बैंक अकाउंट आरबीआई के साथ होंगे, आरबीआई का फिफ्थ फंक्शन क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी फुलफिल होगा. इफ सपोज वी हैव टू कमर्शियल बैंक्स एज एन एग्जांपल, बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा. सपोज बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ बड़ौदा को 25 लाख रुपीस देने हैं, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा को भी बैंक ऑफ इंडिया को पैसे देने हैं, विच इज से सपोज 40 लाख रुपीस. रादर देन 25 लाख का यहाँ से यहाँ ट्रांजिट हो एंड 40 लाख का यहाँ से यहाँ ट्रांजिट हो, बिकॉज इसका भी अकाउंट आरबीआई के पास है, बिकॉज इसका भी अकाउंट आरबीआई के पास है. ये दोनों अमाउंट का जो मिडल अमाउंट सेटलमेंट का है, वो अमाउंट से आरबीआई उनके अकाउंट्स को सेटल कर देगी. बैंक ऑफ बड़ौदा में से 15 लाख रुपीस बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देगी, एंड दस 25 और 40 लाख का ट्रांजैक्शन विल गेट क्लियर. सो लाइक दिस the RBI works as clearing house between the commercial banks as well, and this functions become possible because every commercial bank has got their account with RBI. The next function of RBI or the central bank is it works as a custodian of the foreign exchange. Now country के सारे foreign exchange की custody RBI, that is central bank के पास होती है. डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ मार्केट, आरबीआई कभी फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई मार्केट में बढ़ा देगी, कभी सप्लाई कम कर देगी, एंड दस इट विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स बाय बीइंग द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फंक्शन ऑफ आरबीआई इज इट वर्क्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. When any commercial bank is bound by financial crisis, जब किसी भी कमर्शियल बैंक पे बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, दूसरी कोई कमर्शियल बैंक उसको हेल्प नहीं करेगी, अदरवाइज डूबती हुई बैंक उसको भी ले डुबोएगी. एंड दस अगर कोई बैंक उसे हेल्प ही नहीं करेगी तो वो बेचारी क्राइसिस वाली बैंक क्राइसिस को ओवरकम कैसे करेगी. तो in that worst situation, crisis वाली बैंक will go to RBI, will ask for RBI's help, and at that time RBI, keeping in mind certain strict rules and regulations, उस बैंक को मनी लेंड करेगी
so that that bank can come out of its financial crisis. And like that, it works as lender of last resort as well. I hope the last topic of the unit which we discussed today is also very much clear to you. With this, in this series, whatever we have discussed under the unit money and banking comes to an end. If you have any doubt, any question, any queries related to this topic or the previously discussed topic, you can ping me in the comment section and I'll get back to you. Until the next session, stay tuned and goodbye.